Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV. This is your anchor, Kekrizanya Solo. Well, Shillong witnessed a dramatic escalation of a protest on Wednesday. What began as a black flag motorcycle rally by the Khasi students, the student unions over a 5-point charter of demands, it spiraled into a violence with vehicles vandalized, property damaged, civilians assaulted and vehicles set ablaze. 3 senior KSU leaders were arrested overnight and today they have been sent to 14 days in judicial custody. But the fallout is no longer confined to Shillong. An alleged attack on an Assam family, protests by transport operators at the Assam-Meghalaya border and heightened security across the state have added a fresh violence interstate dimension to the crisis. So what triggered the protests, how they returned violent and what happens next? Let's have a look. Yeah, maybe. Steven, young Shania, what are you actually, Steven? Nama kani gadi ke hospital sekali kai yang kebesak bun kinong sawai hang ni bun ni la athia ngana nas na batia na kendet masin kendet na pecabar na mi ngai ani la dak tedam sudangi adu hang tei hedon te jandukana la salut tei te nda ki sedang ban mi kini na kasnong ru sedang ban mai na kasnong ki ombam bam dei ba pinya komne pidei ban ai dak aras wadan kataru dan nak ting pulet hang tu ki kran he kitem tak kasi kesang ya kini ki sedang ban jong ti ya kini ki brio jang kasnong ki long kham akor ken ba siteng yam ken wan la kum kim chono la kum kita ki tereres ki wan
Okay, cái experience of here very good in jam ta kam Kam de shu pi ban jam ni ha snong ha tha ban ne am ne te kam ya ha na me de ha ni bon ki nong song wai ai du jam du thia lo khai kum ne te kam ya ha re cái tôi cũng chưa số cái công việc số số cái gì cũng có tergas cái pulut kan tu lik tergas để xem music kan mau cái pulut ani ya ka shi ko tam la don me fi ki kawang nen lo mangai I dala khama ki ya na drong ki siat ki ngai I na mangi yang na drong ki pet ki he na drong la don ki ko tam la be tu ni tanda bas ko ni tergas ani ya kata tem ten mang atia tamang asu osmo kan dat baki bethai kan dan mana-mana na pring ni ki sa marjan ni ba misal le kita oh am nangi tum dan ba man sa na state hadu man ta tingin te man sa te ba Black flags, motorcycles, protest slogans. On August 19th, the Khasi Students' Union took its agitation to the streets of Shillong. The rally came after the KSU's 15-day ultimatum to the Meghalaya government expired without what the union considered satisfactory action on its 5-point charter. The administration had permitted the rally subject to conditions intended to ensure that it remained peaceful. But by evening, the protests had taken a violent turn. But first, let's talk about the 5 demands. What was KSU protesting about? At the heart of the agitation are 5 major issues. First, the KSU wants the July 31st public hearing for Sri Cement's proposed cement and limestone mining project in East Jaintia Hills cancelled. Second, it wants stronger implementation of the Meghalaya Residents Safety and Security Act or MRSSA, including entry and exit monitoring until an inner line permit system is introduced. Third, implementation of the amended Meghalaya Migrant Workmen Act, which the union says is necessary to protect employment and also the opportunities for local people. Fourth, changes to NEIGRIHMS recruitment, including concerns over reservation and the recruitment of nurses. And fifth, reforms to recruitment through the Meghalaya Public Service Commission and district selection committees, including opposition to personal interviews for certain posts and demands for greater transparency. So in other words, the agitation brings together 3 highly sensitive issues in Meghalaya. The rally began around 4 p.m. local time but quickly turned violent across Shillong. Police said 31 government and private vehicles were damaged, civilians were assaulted and a government vehicle was set ablaze. A Swami Vivekanand display and Netaji Subhash Chandra Bose busts were also vandalized, while a bus carrying children was reportedly targeted. This brings us to the Assam connection. Assam registered vehicles were reportedly targeted during the violence, with Assam family alleging their vehicle was attacked and a child injured by shattered glasses. While the rally was organized by KSU, the identities and affiliations of those who carried out the individual acts of violence have not yet been independently established. As the violence spread, police moved in. Late Wednesday night, Meghalaya police arrested 3 senior KSU leaders: Raymond Kharjana, KSU President, Ruben Najiar, General Secretary, and Pin Kemlang Sanmiet, Vice President. Police said the arrests were connected to the alleged assault on civilians, vandalism of 31 vehicles, damage to public property, and the creation of fear during the rally. Police also moved towards the KSU office of Jaiwa, where tensions reportedly escalated further and tear gas was used. And today came the latest major development. The 3 arrested KSU leaders were produced before the District and Sessions Court in Shillong. The court remanded all 3 to 14 days in judicial custody. After leaving court, KSU General Secretary Ruben Najiar alleged that the arrests were an attempt to suppress the movement. But he also made clear that KSU would continue its press its demands. So the arrests have not brought the underlying dispute to an end. Meanwhile, the fallout has moved beyond Shillong. Assam transport operators have protested at Jorabad, demanding action and compensation following alleged attacks on Assam vehicles and drivers. Authorities from Assam and Meghalaya are monitoring the interstate border. The Reboy Superintendent of Police has said the situation at Jorabad remains peaceful and that authorities on both sides are coordinating closely.
This is now a critical concern because what began as an agitation over Meghalaya's internal issues could potentially develop into a wider Assam-Meghalaya transport and interstate tension if retaliatory incidents continue. Following the torching of a government vehicle, the Meghalaya government has tightened security measures directing officials to park government vehicles in secure locations and report any suspicious activity or damage to police. The move underscores the seriousness with which the government is treating the violence. The bigger question now is whether the confrontation can return to the negotiating table. The KSU's 5 demands remain. The government has initiated that it is prepared to engage with the union over those demands. But the immediate challenge is separating two very different issues, the legitimacy of raising grievances and accountability for violence. A protest may raise questions about job, migration, indigenous rights or environmental concerns, but attacks on civilians, vandalism and arson are a matter for criminal investigation. And that distinction could determine what happens next. Let's go to the timeline first. August 19, KSU launches a campaign over its 5-point charter and gives the Meghalaya government a 15-day ultimatum. July 31st, a public hearing is held for the proposed Sri Cement project in East Jaintia Hills, and even the KSU subsequently demands should be cancelled. Coming to August 18th, where the KSU prepares for its Black Flag bike rally after the ultimatum expires. The administration grants permission with conditions for maintaining peace. August 19th, 4 p.m., the KSU Black Flag motorcycle rally begins in Shillong. August 19th, in the evening, violence erupts at multiple locations. Vehicles are damaged, civilians are assaulted, government vehicles are torched. The Vivekanand display and Netaji Bose bust are vandalized. Police report 31 damaged vehicles. August 19th night, police arrest 3 senior KSU leaders. Tensions rise around the KSU office in Jaiwa. August 20, in the morning, the 3 leaders are produced before court. They are sent to 14 days judicial custody. August 20, the latest, where Assam transport operators protest at Jorabad over alleged attacks on Assam vehicles. Authorities from both states monitor the border situation. The Meghalaya government tightens security around official vehicles. The Assam State Driver Association has suspended Guwahati to Shillong and Shillong to Guwahati car services following alleged attacks, vandalism and torching of Assam registered vehicles during the KSU rally violence. At Jorabad, drivers stopped Meghalaya-bound vehicles, reportedly allowing only emergency vehicles to pass. The association has demanded an apology from Meghalaya's Chief Minister and Transport Minister, compensation for affected drivers and vehicles' immediate arrest, and written assurances on the safety of Assamese drivers. It clarified that the protest is against violence, not the people of Meghalaya, and appealed for peace. कल जो मेघालय में जो आप लोग सुना ही होगा, जो एक कांड हुआ, ये हम लोग का देख के चुन कर एएस गाड़ी का ऊपर हमला किया. उन्होंने लाठी से, पत्थर से, और एक्सट्रीम लेवल का तो ये हो गया. एक गाड़ी में वो सामने ही आपका गाड़ी है, वो सामने ही आपका इनोवा गाड़ी अभी रखा हुआ है, चारों तरफ से टूटा हुआ है. वो उसमें एक बच्चा था, करीब 9-10 का उम्र का होगा, एक बच्चा था. वो जब ग्लास गाड़ी का ऊपर चढ़ के पैर से, बाद में पहले तो मारा लाठी से, फिर पैर से मारा, और बच्चा एक था, बच्चा का इधर से एक गला का साइड से इधर से घुसा. अगर आँख में घुस जाता ठीक है, दूसरा बात है. और सबसे बड़ा बात है, ये लोग का माइंड में क्या चलता है हमको मालूम नहीं. एक बात है, आपका ये लोग का जो प्रोटेस्ट है, और मैंने जो देखा, जो गाड़ी लेके मैं आ रहा था, लगभग 50 से 100 बाइक, सब डबल, 2-2 आदमी, सब काला, ऐसे काला, मुंह में कुछ बांध लिया, काला कपड़ा, और एक लाठी निकला. ये लोग का कुछ सरकार से डिमांड है. तो आप लोग का मेघालय गवर्नमेंट का सरकार से डिमांड है ना. तो असम गाड़ी ने क्या किया? हम लोग का असम में भी प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग भी प्रोटेस्ट किया साथ. जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हम प्रोटेस्ट किया हम लोग का गवर्नमेंट का साथ. हम मेघालय गाड़ी तो तोड़ने नहीं गया, इधर में मेघालय गाड़ी तो तोड़ा नहीं है. कोई भी रिकॉर्ड हो दिखा दे, या असम में हो या मेघालय में रिकॉर्ड दिखा दे. लेकिन बात वही है, तो ये हर बार हर साथ सीजन आता है ना, ये सीजन है, टूरिस्ट आदमी जाता है देखने का सीजन है. हर सीजन में ये लोग का एक ही काम, असम गाड़ी को टारगेट. क्यों? ये अभी क्वेश्चन चाहिए. ये हर बार ये लोग क्या करता है, लिखाई में दे देता है, बड़ा ऑफिसर आता है, लिखाई में देता है, और नहीं होगा ऐसा. हर बार हम लोग के असम का आदमी के मार खाने के लिए जाएगा. हम लोग मेघालय मार खाने के लिए जाएगा, मार खाने के लिए पैदा हुआ है क्या हम लोग? क्यों मारेगा? हम लोग को शांति चाहिए, हम लोग भी मारने नहीं जाएगा. आप लोग भी ऐसा मत करो ना. कल जो घटना हुआ है उधर में, जैसे उन लोगों ने हम लोग का गाड़ी के ऊपर सिर्फ
एम कर लिया है कि आसाम की गाड़ी को तोड़ना है, आसाम के लोगों को मारना है, ये हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम ये बात खुल के कहना चाहते हैं, उधर में जो प्रशासनिक एक्चुअली विषय था और वहाँ में पुलिस था, आर्मी के बहुत लोग थे, तो उन लोगों ने जो KSU का स्टूडेंट थे उन लोग को रुकाया क्यों नहीं गया? मतलब इंटेंशनली किया गया सिर्फ आसाम की गाड़ी के ऊपर। उन लोग का मांग जो भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट की मांग करे, वो इंडिपेंडेंट तरीक़ा से जो होता है प्रोटेस्ट करे, कोई बात नहीं। लेकिन हम कर्नल संगमा जी से एक बात कहना चाहते हैं, हाल ही में ऐसा हुआ था, तो उस टाइम एक एग्रीमेंट हुआ था आसाम और मेघालय के बीच में। वो जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट का क्या निकला, नतीजा क्या निकला? उस नतीजे के लिए हम लोग का आदमी मार खाना पड़ रहे। वो जो पर्यटक गया है आसाम की और इंडिया के कई जगह से जो पर्यटक गया है, उन लोग का सेफ्टी के लिए वो क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं कर रहे, हम लोग देख रहे हैं ना। तो उधर से जो हम लोग का उधर अभी भी हम लोग का ड्राइवर फंसा है या पर्यटक फंसा है, वो लोग ने चुप चुप के हम लोग को वीडियो भेज रहे हैं कि हम डर के मारे अभी गाड़ी के नीचे सो रहा है। तो ऐसा अभी हाल बना रहा है, लेकिन उधर का पुलिस क्या कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेघालय के लिए फॉलो नहीं होता है क्या? मेघालय का पुलिस वो नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं क्या? वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेघालय का खासी पीपुल हो या आसामीज पीपुल हो या राजस्थानी पीपुल हो, सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो देखा, हम लोग का जब गाड़ियाँ खड़ा रहते हैं, पुलिस बदल हो कहीं भी हो, तो उधर का पुलिस क्या करता है, हम लोग को ऊपर फाइन लगाता है, हम लोग के ऊपर बैरिकेड लगा के बोलता है नो पार्किंग में रखा है। वो सब काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी से वो नहीं रहेगा, हम होने नहीं देंगे। हम लोग आसाम की तरफ से जो गाड़ियाँ जा रहा है शिलोंग की तरफ, जिसको पता नहीं है, तो हम उनको रुकवा रहा है कि उधर मत जाइए, उधर मामला गर्म है। क्योंकि उधर जाने से अगर गाड़ी तोड़ेंगे, मारेंगे, तो बोलने वाला उधर कोई नहीं, क्वेश्चन करने वाला उधर कोई नहीं। हम लोग का जैसा वो लोग मतलब वेलकमिंग लोग नहीं है। From a 5-point charter to 31 damaged vehicles, arrests, and now an interstate fallout, the Shillong protest has moved far beyond the original demands. The KSU says its movement will continue, where the government now faces the task of addressing the grievances while ensuring accountability for the violence. And with Assam transport operators already protesting at the border, the biggest concern tonight is whether this remains a Shillong law and order episode or becomes a wider Assam-Meghalaya flashpoint. For now, the focus remains on the 3 KSU leaders in judicial custody, the police investigation into the violence, and whether dialogue can prevent further escalation. Until then, keep watching, stay informed.